नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट। लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है मार्केट्स में। तो आइए जानते हैं आज इंडेक्स के लिए कौन से की लेवल्स रहेंगे फ्रॉम एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव, एज वेल एज कौन से सेक्टर्स आज फोकस में रहेंगे। फर्स्ट अप कमिंग टू द अपडेट इन द ग्लोबल मार्केट्स इन ट्रेड येस्टे। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा गया। द डाउ वॉज अप 1.06%, S&P 500 अप था 0.53% और नैस्डैक ने बंद दिया अप 0.36%। ओवर द पास्ट टू ट्रेडिंग सेशंस अगर देखा जाए, S&P 500 हैज़ फॉर्म्ड लॉन्ग कैंडल्स विद लॉन्ग लोअर शैडो, जो दर्शा रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट है अराउंड दी 20-day EMA जोन। Any decisive move above 5,960 could trigger a sharp upside rally, with the index likely to test the levels of 6,050 levels in the short term. Coming to the update regarding Brent crude. So Brent crude has climbed above its 20-day EMA level and is now approaching the 50-day EMA. A decisive breakout above 75 could fuel a pullback towards 77 in the short term, while on the downside 72.4 is acting as a crucial support zone. Coming to the update regarding the dollar index. So the dollar index witnessed a sharp upside rally and ended above 107 level for the first time after October 2023. Going ahead, it is expected to test 107.50 with a potential move towards 108. A strong dollar could put pressure on India and other emerging markets, potentially leading to capital outflows and indicating their currency stability, impacting the currency stability. Coming to the update regarding Nifty. So on the weekly expiry day, the benchmark index Nifty opened with a downside gap, extending its decline during the first half of the trading session. However, in the latter half, the index hit a low of 23,263 and staged a minor pullback. It has ended the session at 23,349 with a cut of 0.72%. On the daily scale, it has formed a bearish candle with a minor lower shadow. Yesterday's correction was primarily driven by Adani Group stocks, which plunged over 10%. We advise avoiding these stocks for now, as they are all in a strong downtrend from a technical perspective. Going ahead, the level of 23,200 will act as a crucial support for the index, which is the 61.8% Fibonacci retracement level of the prior upward rally, which started from the election result day low towards the all-time high. Any sustainable move below the levels of 23,200 would lead to further pressure in the index towards the mark of 22,800, followed by 22,550 in the short term, while on the upside, resistance has shifted lower in the zone of 23,500 levels. अगर ऑप्शन चेन के बारे में बात करें तो 23,400 और 23,500 के स्ट्राइक्स में डिसेंट कॉल राइटिंग देखा जा रहा है, और पुट साइड पे मेनली 23,300 और 23,000 के स्ट्राइक में OI बिल्टअप देखा जा रहा है। नवंबर का जो मंथली सीरीज का PCR है वो करंटली 0.84 है। कमिंग टू द अपडेट रिगार्डिंग बैंक निफ्टी. So in trade yesterday, the banking benchmark index experienced a sharp correction but found support near its 200-day EMA, post which we witnessed a sharp rebound of over 600 points. It closed the session at 50,373 with a cut of 0.50%. On the daily chart, if we see, a bullish hammer-like pattern has emerged, hinting at strong buying interest near the 200-day EMA levels. Adding to the optimism, the index has outshined the frontline indices, showcasing its resilience and relative strength. Going ahead, the zone of 50,700 will act as the immediate hurdle for the index. Any sustainable move above the levels of 50,700 will lead to a sharp upside rally in the index towards 51,200, followed by 51,600. While on the downside, the zone of 50,000 will act as the immediate support for the index. Any sustainable move below the levels of 50,000 will lead to resume its downward journey. In that case, it is likely to test the levels of 49,600. अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में बात करें तो 50,500 और 51,000 स्ट्राइक्स में डिसेंट कॉल राइटिंग देखा जा रहा है, और पुट साइड में मेनली 50,000 और 49,500 के स्ट्राइक्स में OI बिल्टअप देखा जा रहा है।
बैंक निफ्टी के मंथली सीरीज के पीसीआर करंटली इट स्टैंड्स एट 0.91. कमिंग टू द की मार्केट इंडिकेटर्स, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्लियरली डिक्लाइनिंग के स्टॉक्स के फेवर में था. देयर वाज प्रेशर विच वाज सीन इन द ब्रॉडर मार्केट्स एज वेल. कमिंग टू द की सेक्टर्स, so technically if we see automobile, FMCG, metal, media, oil and gas, PSU bank, CPSE, PSE, these are the sectors which are likely to underperform in the short term. Coming to the FI data, तो लगातार FIs ने अक्टूबर सीरीज़ में और नवंबर सीरीज़ में सेल ही किया है एंड दी ट्रेंड कंटिन्यूज टू रिमेन सो इन ट्रेड yesterday as well. FIs sold in the cash market to the tune of 5,320 crores while DIs purchased to the tune of 4,200 crores. That's a wrap of today's edition of the podcast. Thank you for regularly tuning in. Do tune in for more market updates and insights. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.